firstly, Shagun, hearty congratulations again for your this beat, undefeated, because every time that we think about RBI DEPR examination, right? And it's always very confusing for students. बहुत सारा confusion होता है, whether there's no syllabus, there are no PYQs, there's nothing in fact for the examination, for reference for a student. बस eligibility पता है, and then the students start to prepare. So I think amidst this, आपने ये मुकाम हासिल कर लिया, and I really congratulate you from whole heart. Thank you so much, ma'am. I mean, yeah, ma'am. I mean, thank you so much for like giving me this privilege, and yeah, I mean, it's a privilege to clear such a prestigious organization's DEPR exam, basically, the RBI DPER. Absolutely. It's a very prestigious examination, and you really made it. So I think the very first thing that I would like to ask you is, itna prestigious exam, itna cutting exam, there's a lot of difficulty in terms of the phases that there are, and then you have to qualify each of the phase and everything also. तो सबसे पहला रिएक्शन आपके फैमिली फ्रेंड्स का क्या था? हाउ आर दे फीलिंग एंड हाउ आर यू फीलिंग? मैम एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया था, मेरे को डेंगू रखा था. इनफैक्ट अभी भी मेरे को डेंगू के आफ्टर इफेक्ट्स हैं. so लिटरली मतलब मैं लाइक आई वाज जस्ट स्लीपिंग एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई गोट टू नो कि ये एग्जाम क्लियर हो गया. सो देन मैम ऑब्वियसली खुशी तो बहुत हुई, बट फिर वो ये सबको इन्फॉर्म करने में भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं थी. ऑब्वियसली फिर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को बताया, जो भी आसपास में थे, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स. तो ऑब्वियसली लाइक दे वर वेरी वेरी हैप्पी एंड या उनको भी पता था कि रिजल्ट आने वाला है, बट ऑब्वियसली एंटिसिपेशन वाज देयर कि कब आएगा. और फिर बीच में मेरे को डेंगू हो गया, तो लोग फिर थोड़े से वैसे परेशान हो गए. बट या so right, yeah, ma'am. Right. But yeah, obviously everyone was really happy. How did you get motivated to prepare for this exam, this difficult exam? So ma'am, so basically ma'am, like my journey to this exam started in 2018. So 2018 में मैम मतलब मेरे को कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था इस एग्जाम का. लाइक आई जस्ट गिव इट जस्ट टू ट्राई कि मतलब कैसा होता है ये एग्जाम, क्योंकि ऑब्वियसली हम जैसे आपने भी बोला, इस एग्जाम का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है एंड वो चीजें नहीं है. सो जब मैंने 2018 में ये एग्जाम दिया, तो इन फेज 1 आई गॉट टू नो कि बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स. सो वन इज फोकस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन अनदर वन ऑन मैक्रो, एंड देन द लास्ट पोर्शन ऑन इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. सो मैम वहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा इस एग्जाम का कि, एंड देन ऑब्वियसली बाय गॉड्स ग्रेस एक्चुअली आई क्लियर्ड द फेज 1 इन 2018. बट देन इन फेज 2 आई गॉट टू नो कि द basically they test the subjective skills in phase 2. so वहाँ पे मेरे को पता चला कि इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं, एंड टेक्निकल क्वेश्चंस they are still there, but they are in less proportion than in the phase 1, because phase 1 is purely technical level exam. So then मैम I couldn't clear the phase 2 exam in 2018, but वहाँ से मेरे को इस एग्जाम का थोड़ा आइडिया लग गया था कि इस एग्जाम के लिए मतलब फेज 1 में थोड़ी ऑब्जेक्टिव स्किल्स और थोड़ा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए, एंड देन इन फेज 2 थोड़ी सब्जेक्टिव स्किल्स थोड़ी ज्यादा चाहिए. सो देन आपने कभी रिसर्च के बारे में सोचा कि इकोनॉमिक्स में रिसर्च भी कर सकते हैं? So मैम एक्चुअली मेरा जो फाइनल ईयर था, so basically मैम let me first give my background, like my educational background. So मैम I did basically my masters and bachelors in economics in an integrated dual degree program at IIT कानपुर. So मैम वहाँ पे मेरा जो लास्ट ईयर था, that was like purely masters program. वहाँ पे मेरे को एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना था. तो वहाँ पे एक्चुअली I got to know कि like
बस एक बार कॉलेज में तो हमने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ लिया था, बट लाइक इन द मास्टर प्रोजेक्ट आई गॉट टू नो कि इकोनोमेट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है, लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पी वैल्यूज एंड टी वैल्यूज, एंड हम कैसे कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं, कैसे डेटा उठाते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं. सो मैम वहां से मेरे को मतलब थोड़ा सा रिसर्च का आइडिया लगाता है. एंड ऑब्वियसली I mean, ma'am, I don't know about research in other fields, but yeah, the research in economics is really interesting because काफी चीजें आपको लाइक बेसिकली यू प्ले विद डेटा मेजरली, सो वो चीज काफी रोल प्ले करता है. Absolutely. And this, the data and econometrics, mathematical economics, statistics, ये वाले subjects वैसे भी काफी prominent हैं in the phase 1 examination of RBI DPER. Yes, ma'am. So they are very relevant, and that your interest lied in those exams also, those modules and those subjects also, which is why also I think phase 1 में आपको काफी clarity थी. प्लीज शगुन ये बताइए कि फेज 1 में जैसे स्टूडेंट्स ऑलवेज रिसर्च एंड ट्राई टू सर्च अबाउट द सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पास एक रेफरेंस है जिसकी बेसिस पे वी टेल द स्टूडेंट्स की दीज आर द मॉड्यूल्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट यू कैन रियली गो फॉर. तो आपकी पढ़ाई और मेन फोकस फेज 1 में कहाँ पे था? सो मैम if I talk specifically, ma'am, then because ma'am यहाँ पे कोई defined syllabus तो नहीं है, but what we can do is we can just just do some basic, एक बुक पकड़ ली, उसके कुछ बेसिक्स कर लिए, और मैम उसके बाद मैम ऑब्वियसली जो अच्छी बुक्स होती हैं जो आई थिंक सबको पता ही है, वो बुक्स ऑब्वियसली अगर आप करोगे तो, और उनके बेसिकली अगर आपकी उनकी अच्छे से आपने वो कवर की हैं बुक्स, तो मैम आई थिंक ऑब्वियसली वो चीज फिर मैटर करती है. जैसे मैम माइक्रो में मैम हॉलवेरियन की बुक काफी फेमस है, तो वो चीज थोड़ी सही रहती है. एंड देन मैम ऑब्वियसली इस एग्जाम में थोड़ी न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो निकोल्सन एंड स्नाइडर की एक बुक है, उसके भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने होते हैं. एंड देन मैम मैक्रो में ऑब्वियसली फ्रोयन की बुक काफी ज्यादा फेमस है, पूरी इकोनॉमिक्स की कम्युनिटी जो भी है एस्पिरेंट्स की. एंड मैम इकोनोमेट्रिक्स के लिए एक्चुअली मैम मेरे कॉलेज के भी नोट्स थे कुछ, वो मैंने पढ़े थे. एंड मैम एक साइट है stattrack.com, उसपे कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के, तो मैम वहां से मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की थी और कुछ फॉर्मूले मतलब लिख लेते हैं जो कि मैं एग्जाम में यूज कर सकूं. और मैम इस बार तो मैम एक्चुअली पेपर में स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा आई थी, इकोनोमेट्रिक्स थोड़ी कम थी. यस, आई थिंक जो 4 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स, सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं फेज 1 में, बिकॉज मार्क्स तो ज्यादा है ही, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है, बिकॉज देन द नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है. यस मैम, राइट. सो आई थिंक इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड इफ देयर इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपको फॉर्मूलेज और आपका जो फंडामेंटल है वो प्रॉपर है, तो आई थिंक वो 4 मार्कर्स एक्चुअली प्ले अ वेरी पिवटल रोल, गेम चेंजर होते हैं आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए. So good work with that. अगर हम phase 2 की बात करते हैं, तो phase 2 is very subjective and word limit भी नहीं होता. किसी और एग्जाम, competitive एग्जाम की अगर हम compare करें तो कोई ऐसा specific word limit नहीं है, and we think that there is a leniency in phase 2. लेकिन एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से, एस्पिरेंट के और एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से जो क्वालिफाई कर गया है फेज 2, व्हाट आर योर डूज एंड डोंट्स? आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि फेज 2 की पढ़ाई के क्या 5 ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं? सो मैम इफ आई मेजरली लाइक मैम मेरा 2 बार से फेज 2 ही अटक रहा था एग्जाम में. सो फेज 2 की मैम मेरे को तो एक्चुअली इस बार ये लर्निंग रही थोड़ी सी कि जो आंसर राइटिंग का पोर्शन एक्चुअली दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फेज 2 पर्सपेक्टिव, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो मैंने एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है आंसर का, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो भी मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया था. बट इस साल मैंने उस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस की थी लाइक फॉर 1-2 months. And then when I wrote this paper, the phase 2 exam, economics वाला majorly, तो then I felt the difference कि कितना difference होता है, क्योंकि मैम
स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन है मैम, वो तो मेजरली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करते वो लोग, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इस साल कुछ वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन था जो सीधा था, एंड देन they were asking about the two major women schemes which are run by government. So मैम मतलब क्वेश्चन मैम सीधे ही थे, बट वही है, अगर आप उनको अच्छे से थोड़ा लिखोगे नहीं तो आई थिंक वो चीज थोड़ी करती है। और एंड देन मैम अगर इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करें मैम, सो मैम अगर हम कुछ ऐसी रिपोजिटरी बना ले, जैसे ऐसे में कुछ कोट्स हो गए या फिर कुछ डेटा हो गया, तो मैम ऑब्वियसली वो चीज भी एक प्लस पॉइंट रहता है हमारे फेज 2 के मार्क्स में। So we would like to know कि आपकी कौन है the major inspiration for life, so that आप इस मुकाम पे भी पहुंच पाए और प्लस आपके लिए वो कांस्टेंट एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहा। मैम लाइक अगर मोटिवेशन तो मैम आई थिंक सबसे बड़ा, आई थिंक ऑब्वियसली पेरेंट्स ही हो सकते हैं किसी की लाइफ, मतलब एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि मैम ऑब्वियसली उन लोगों के साथ मतलब काफी ज्यादा मतलब इंटरेक्शन रहता था ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी या फिर कुछ दिक्कत होती थी, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दी होल प्रिपरेशन फेज, तो मैम तब ऑब्वियसली तब तो मैम घर फोन किया और मम्मी पापा लोगों से बात की, और मतलब उन लोगों का ऑब्वियसली मैम काफी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम का रोल रहता है, क्योंकि वही आपको थोड़ा वो करते हैं, क्योंकि मैम इतनी सारी चीजें हैं, जैसे आपने बोला ऑब्वियसली फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, और भी पता नहीं मतलब क्या क्या रहता है लाइफ में, बट वही है मैम, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैम मम्मी पापा लोगों से बात कर लिया, फिर वो कर लिया। सो मैम वो चीज मतलब काफी ज्यादा फिर रोल प्ले करती है थोड़ा to Absolutely. maintain that state of mind. Absolutely, absolutely. There's, जैसा मैंने बोला कि there is some positivity that each person finds, कि आपको किसी इंसान में दिखेगा या आपको कभी बुक्स में दिखेगा या किसी एग्जाम में दिखेगा, and I think parents के अलावा there's like कोई better source of inspiration, motivation नहीं हो सकता to gain that energy and to practice for your exam, for your final goal. So kudos to that. Thank you. And the end of the journey is also very difficult for this exam, because it concludes with a very intriguing interview round. And तो आपने किस तरह से prepare किया, and how did Ecoholics also help you find something better in that particular journey of yours? So ma'am, as you know, मैंने Ecoholics से mock interview लिया था for this DEPR last stage of the exam. And ma'am, actually I would like to say few words, क्योंकि मैम DEPR का जो interview stage है, I think it's important. It's very important because the marks that are awarded, that are basically extreme. There is a possibility for extreme marking. There can be extremely low marks as well, and then there can be like very high marks as well. So unlike other exams, this exam has like very high weightage of the interview stage. So then it becomes imperative कि हम interview stage को मतलब हल्की तरह से ना लें, इसके भी अच्छे से preparation करें. So ma'am, as you know, मैंने Ecoholics में mock interview किया था, and then ma'am from that feedback and the interview was actually very helpful to me, because वहाँ से मेरे को पता चला कि एक तो मेरे को nervousness थोड़ी ज्यादा हो रही थी, so वो उस चीज का मैंने देखा कि like how can I tackle this, and then ma'am एक चीज और मेरे को ये आइडिया लगा कि एक्चुअली द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम द टेक्निकल साइड, दे माइट बी मोर फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी करंट पर्सपेक्टिव, और मैम एक्चुअली हुआ भी इन द रियल टाइम इंटरव्यू एज वेल, कि उन लोगों ने मेरे से जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और अभी इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो comparison है compared to the current situation versus the global financial crisis situation and the taper tantrum situation, वो सब उन लोगों ने मेरे से पूछा, जो कि मेजरली रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी करंट पर्सपेक्टिव पे ही
है. So ma'am, in that way it was actually like very useful for me. The mock interviews was provided by colleagues. And then ma'am, coming to the strategy of the interview, so ma'am, mostly obviously हम the technical part वो थोड़ा revise करना पड़ता है, वो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग मैम मैं ज्यादा नहीं कर पाया था एक्चुअली, बट आई थिंक वो चीज भी काफी हेल्प करती है. एंड मैम जो आरबीआई की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट है और रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग है, और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, हमने 3-4 रिपोर्ट मैंने ऊपर ऊपर से देखी थी, क्योंकि मेरे पास अगेन इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको पूरा कवर टू कवर पढ़ पाऊँ. बट ये ऊपर ऊपर से देख ली थी, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि मतलब ऐसा ना हो कि इंटरव्यू उन्होंने कुछ पूछ लिया मैं एकदम ब्लैंक हो गया. Right. Interview does play a very big part of the whole game, and I'm very happy, and like the whole team Ecoholics is very happy that you cracked that hard nut to crack. क्योंकि as you mentioned, interviewer किस तरह से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे एंड उनका क्या पर्सपेक्टिव है वो जानना, वो और सही जवाब देना, that to make to find that key actually is very difficult sometimes. So we are very happy that you cracked the exam, cracked the interview, and you are at this prestigious job. So hearty congratulations once again from the whole team. And we are now a family, and I'm very very sure that, and I'm hopeful that even in the future we will always collaborate with you, because there are so many things that we also learn from our aspirants, and even you can make a major mark in our students lives, क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग होता है कोई भी स्टोरी इस तरह की जो होती है. It inspires the students a lot, especially जो prepare कर रहे हैं, just जिन्होंने शुरू करा है अपना preparation. So I'm very sure that you will help them as well in the upcoming future. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Actually, I mean, it was my pleasure to be on this platform, and I hope जो मैंने बातें कही हैं उससे किसी future aspirant का अगर थोड़ा सा भी फायदा होता तो I mean that will be like a very good thing. Right. Absolutely. Okay, thank you so much, Shagun, and please take care of your health. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Okay. Have a good day. Bye-bye.